What you mean, the parking garage underneath? Oh my gosh! Oh my gosh! There's a bunch of... Look at that! The whole door right here. There's a what? There's a whole door. Oh, yeah, you can see what's coming out of the door. Nearly 20 tornadoes touched down across Lubbock, Texas, on the evening of June 5, 2025, driven by a persistent and intense supercell thunderstorm. Lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If in a mobile home, a vehicle, or outdoors, move to the closest substantial. The storm's most notable feature was the extraordinary occurrence of two large tornadoes forming side by side nearly simultaneously, a rare event even for Tornado Alley. These twin tornadoes intensified the destruction, with wind speeds exceeding 100 miles per hour uprooting trees, tearing roofs off homes, and leaving neighborhoods devastated. The storm produced baseball-sized hail that battered the region, shattering windows and denting vehicles, while snapping power lines caused widespread outages, affecting over 10,000 customers across Lubbock and surrounding areas. Oh my God! The atmospheric setup that day was exceptionally volatile. Surface temperatures climbed into the mid-80s, while dew points hovered near 70 degrees, fueling extreme instability. A vigorous upper-level trough generated strong lift, while a well-defined dry line served as a trigger for severe storm development. Crucially, strong vertical wind shear, a significant change in wind speed and direction with height, created the environment for rotating updrafts known as mesocyclones. These mesocyclones led to the formation of tornadoes, including the rare twin vortices that tracked parallel paths for several minutes, compounding the storm's destructive footprint. Initial tornado warnings were issued by the National Weather Service by early evening as radar showed rapid storm intensification west of Lubbock. By 7:21 p.m., spotters confirmed a tornado touchdown northwest of Reese Center, Texas. The storm's slow progression allowed it to linger over populated areas longer than usual, sustaining tornado intensity. At 7:38 p.m., the NWS issued a particularly dangerous situation, PDS tornado warning, an alert reserved for confirmed or imminent large violent tornadoes posing extreme risk to life and property. The first tornado moved southeast towards Shallowater and then into Lubbock, producing destructive winds estimated above 100 miles per hour. Concurrently, a second tornado developed just miles away, a phenomenon made possible by two strong mesocyclones within the same supercell storm. These simultaneous tornadoes inflicted overlapping damage, further complicating emergency response efforts. Hailstones ranging from golf ball to baseball size pummeled the region, damaging roofs, breaking windows, and denting vehicles. Reports indicated hail as large as 3 inches in diameter in parts of Lubbock and adjacent communities. The severe hailstorm coincided with peak tornado activity, amplifying property damage and hazards. Power infrastructure was severely impacted. Lubbock Power and Light reported over 4,400 customers without electricity shortly after the storm passed. Additional outages affected roughly 2,450 customers in Hockley County and nearly 5,000 more through the South Plains Electric Cooperative Network. Overall, more than 10,000 customers in the region were left without power due to downed lines and damaged equipment. Residential damage was widespread.
Numerous homes lost roofs, experienced partial structural failures, and suffered extensive window damage. In commercial districts, businesses faced broken glass and collapsed signage. Trees were uprooted or snapped, with debris scattered across major roadways, delaying emergency crews. Key city infrastructure, including traffic signals and utility poles, was heavily damaged. Emergency response teams mobilized swiftly. Firefighters, paramedics, utility workers, and volunteer organizations coordinated efforts amid hazardous conditions. Thanks to their efforts, there were no confirmed fatalities, though dozens sustained injuries ranging from minor to serious. The community's resilience was evident. Local shelters opened promptly to house-displaced families, while neighbors and businesses provided food, water, and aid to those affected. Volunteers helped with cleanup efforts, even as storms continued to threaten the region. This solidarity proved vital in mitigating the human impact of the disaster. Meteorologists explain the twin tornado event as a result of two distinct, robust mesocyclones embedded within the parent supercell. This rare dual mesocyclone configuration, supported by intense low-level shear and sustained instability, allowed two tornadoes to develop and maintain close proximity without interfering with each other's rotation. Slow storm motion and ample inflow of warm, moist air provided the necessary conditions for both vortices to persist simultaneously. Holy crap. See that other one coming down? Yeah. It Fujiwara right there, right next to us. Look at that. नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल एमपी वेदर फोरकास्ट पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में मध्य प्रदेश के तमाम क्षेत्रों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है और किन जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। वर्तमान समय में दोस्तों मध्य प्रदेश के भागों पर भयंकर गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है और बारिश के संकेत अभी दूर दूर तक नहीं है। हालांकि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के मौसम में तेजी से परिवर्तन देखने को मिलेंगे और तेज बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। 10 जून के मौसम के बारे में बात करें तो 10 जून के दिन तो देखिए मॉडल के अनुसार तो टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर इन क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी तो कम रहेगी, फिर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। और जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों पर लगभग मौसम साफ रहेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 10 जून के दिन मध्य प्रदेश के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 11 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 जून के दिन देखिए आप सभी मॉडल के अनुसार ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश का दायरा तेजी से ऊपर की तरफ और पश्चिमी जिलों की तरफ पहुंच रहा है। यानी बारिश वाले बादल कुछ भोपाल से लेकर विदिशा, अशोकनगर, शाहजहाँपुर, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी इन क्षेत्रों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले हैं नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, उज्जैन, अलीराजपुर, बाड़वानी, खरगोन, देवास, इंदौर इन सभी हिस्सों पर अभी भी मौसम साफ रहेगा। हालांकि आने वाले दिनों में बारिश वाले बादल इन क्षेत्रों पर भी पहुंचने लगेंगे। और जो मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी भाग हैं बैतूल से लेकर छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, उमरिया, शहडोल, जबलपुर, पन्ना, सतना, रीवा के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 11 जून के दिन मध्य प्रदेश के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 12 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 12 जून के दिन कितना बदल सकता है मध्य प्रदेश का मौसम और किन भागों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश की इंटेंसिटी तो दोस्तों मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों पर देखी जा रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार पर्याप्त नमी वाली हवाएं मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, उमरिया, शहडोल, जबलपुर के आसपास के भागों पर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भीषण बारिश होने की आशंका है। और जो